Am I audible? Am I audible to all of you? Jason, Okay, thank you. So, so you have almost covered supervised learning techniques, unsupervised learning techniques, and basic of pattern and about its different types, the features. Almost more than 75% of your syllabus being covered already. Okay, today I'm going to discuss one important algorithm, and that is important when you go for reducing the dimension. Okay, so that is of course none other than principal component analysis. Now you tell me my screen visible to you or not? Is my screen visible? Yes, sir. Okay, thank you. So let's start the discussion on principal component analysis, or shortly we know it as PCA. Okay, so when we talk about PCAs, then few terms are very important that we need to know. Starting with that, one of such terms, that is covariance. Now, what is covariance? Why do we need it? Let's go through it first. So variance and covariance are a measure of the spread of a set of points around their center of mass or mean. Okay, so around that mass means around that means you know that in K-means clustering algorithm also you have seen centroid, right? That is representing the whole cluster. Similarly, we have some center and surrounding it those data points. So this variance and covariance are the measures of the spread of a set of points around those center or mean, because you know that we get the centroids with the help of mean, so that's why we are referring it as mean here. Okay, then variance, measure of the deviation from the mean for points in one dimension. So from the means, how it is deviated by considering only one dimension, then it will give us the variance. Do note it that I'm talking about one dimension here. Okay, as for example, suppose I'm considering height, then the single dimension variance is the variance. Okay, deviation is the variance. Now, covariance as a measure of how much each of the dimension vary from the mean with respect to each other. जब हमने वेरिएंस की बात की तो एक डायमेंशन वन सिंगल डायमेंशन की बात किया था. Now in covariance we try to measure how much those dimensions vary from the mean with respect to each other. Okay, that's the difference between this variance and covariance. So covariance is measured between two dimensions to see if there is a relationship between those two dimensions. Okay, कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे जिससे ये चीज और बेटर समझ में आ जाएगा. Sorry. So see, number of hours you study and the marks of them, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. Say you study 2 hours every day and accordingly you say obtain 65% marks. So both the dimensions, यहाँ पर dimension क्या क्या है? Number of hours and marks obtained. We try to establish a relation between these two dimensions. So this is measured with the help of covariance. I'm repeating again, covariance is a measure of how much each the dimension vary from the mean with respect to each other. Now,
if we stick to only one dimension, we try to measure the deviations with respect to one dimension, then this covariance is nothing but our variance, right? So the covariance between one dimension and itself is the variance. So today's first question to you that you need to answer through a comment, that what is the relationship between variance and covariance? Okay, I hope the question is clear to you. Now, there's this equation, although the equations due to this match type, I think is not clearly visible. It's okay, it's not a problem. So what you are trying to calculate actually, you are trying to calculate the mean. आप सभी को पता है कि मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर शाम आप करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइड करते हैं, राइट? देन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कितना वेरिएंस हो रहा है. तो सपोज एक्स आई बार एंड वाई आई बार, एंड ये जो x एंड y है, सपोज दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट्स वी एम कंसीडरिंग, तो उस मीन से जितना डेविएट हो रहा है, देन इफ वी कंसीडर ऑल टुगेदर, देन दैट विल गिव अस द कोवेरिएंस. Don't worry, we'll go through several examples. Again, this will be more clear then. Now, if we represent this with the help of a three-dimension matrix, then you'll see covariance xx, covariance xy, covariance xz, covariance of yx, covariance of yy, covariance of yz, covariance of zx, covariance of zy, covariance of zz. Now, can you quickly answer me from the last point that I told you, what will be the variances here? Which will give you the variances? What I said, I'm giving the hint again. What I said that if you stick yourself to one dimension only, if you want to if you are measuring the deviation from the mean for points in only one dimension, then that will become what? Variance. एक डायमेंशन कंसिडर कर रहे हो आप एक समय पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? वेरिएंस. तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कोई बात नहीं, ये इक्वेशन से हम कोवेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन कैलकुलेट करके उससे क्या कितने डिफरेंस आ रहे हैं, वो चीज से आपको कोवेरिएंस मिल रहा है. अब इस चीज को एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया है. आप इस मैट्रिक्स से मुझे ये बताओ, कहाँ आपको वेरिएंसेस मिल रहा है? कोवेरिएंस नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट वेरिएंसेस. Can anybody answer this question? Well, no problem. I'm giving you the answer. In the diagonal, okay, in the diagonal you will find the variances. Why? See, diagonal मतलब क्या है? ये covariance of x है, covariance of y है, and covariance of z है, right? तो मैं x with respect to x consider कर रहा हूँ. इन दोनों से कितना मतलब उस पार्टिकुलर सेंटर से ये दोनों का क्या डेविएशंस कंसीडर कर रहा हूँ. अब ये दोनों क्या है? एक ही है, एक सिंगल डायमेंशन कंसीडर कर रहा हूँ, राइट? सो नाउ दिस कोवेरिएंस ऑफ एक्सेस इज नथिंग बट वेरिएंसेस, right? So similarly, yy, that will give you the variances, covariance of zz, that will give you the variance. So we can say that diagonal is the variances of x, y, z. ठीक है? I hope this is clear to you. Can I assume it as clear or not? Can you respond? Sir, can you explain one more time? Please specify that where you are finding the difficulty. From again the signal with the conversion, convariance of x from there again. Okay, good. So see, diagonal. I hope you all know what does it mean by diagonal. Diagonal सबको पता है diagonal क्या है. Okay. So यहाँ diagonal क्या है? एक क्या मैट्रिक्स है? 3x3 मैट्रिक्स है. हमने 3 डायमेंशन कंसीडर किया है, राइट? मैं क्या पूछ रहा था आपको कि वेरिएंसेस कहाँ है, और वेरिएंसेस और कोवेरिएंसेस का रिलेशन क्या है? द कोवेरिएंस बिटवीन वन डायमेंशन एंड इटसेल्फ इज द वेरिएंस.
अगर मैं एक ही डायमेंशन कंसीडर करूँ तो वो कोवेरिएंस को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएंसेस। आप डायगोनल को लुक करोगे, इफ यू लुक एट द डायगोनल केयरफुली, यू विल फाइंड दैट covariance of y, covariance of z. Is there two dimension involved in this part? Yes or no? No, because see, xx, I'm not considering xy or xz. I'm considering x only. So this is the single dimension. So covariance of xx, covariance of yy, covariance of zz. तो हम x को x के रेस्पेक्ट में covariance calculate कर रहे हैं, right? So similarly, we are trying to calculate the covariance of y with respect to y. Similarly, we are trying to calculate covariance of z with respect to z. So only one dimension is considered. We try to calculate the covariance between one dimension and itself, and that is nothing other than your variance. Right? Oh, okay. So I hope you have got it now. Is it clear now or not? Okay, okay, yes, sir. Okay, good. So মই ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ পৰা মই এইটোৱে কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ যে ডায়গনেল ইজ দ্য ভেৰিয়েন্সেছ অফ এক্স ৱাই জেড। Can I? Yes or no? Because in the diagonal you have Yes, seen sir. that we have the variances. Although we are calculating the covariances, we have found that in the diagonal we are actually determining the variances of x, y, z. यही तो हमने अभी देखा, right? Then again you see that covariance of xy is equal to covariance of yx. Similarly, covariance of zy is equal to covariance of yz. So what is this? This means that that matrix is symmetrical about the diagonal. ये जो suppose I am considering this one. Suppose this part. This part will be 1 1 1 2 2 1 2 2, right? 1 2, that is covariance of xy. 2 1, that is covariance of yx. So they are equal. So of course that makes the matrix symmetrical about the diagonal. So when we extend this 3 dimension into n dimension, then obviously we'll get an n cross n covariance matrix. Right now we are observing 3 dimension, but if we extend it to n dimension, then this should become n cross n covariance matrix. So I hope this covariance matrix portion is clear to everyone. Yes or no? Okay, thank you. So covariance again. Let's continue the discussion. What is the interpretation of covariance calculation? Two-dimensional analysis, X number of hours studies for a subject, say Y marks obtained in the subject. So covariance value say suppose 104.50. What does this value mean? ये value क्या represent करेंगे? Can anybody guess? My question is that what is the interpretation of covariance calculation? Covariance calculate हम क्यों कर रहे हैं suppose? मैंने जैसे एग्जांपल दिया 2 डायमेंशन में x रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडीड फॉर ए सब्जेक्ट। सपोज ये पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए आप हर रोज 2 घंटे पढ़ रहे हैं, एंड वाई सपोज इस पैटर्न रिकॉग्निशन में आपने आउट ऑफ 100% यू हैव ऑब्टेन से 80%, बट मैंने कहा कोवेरियंस वैल्यू 104.5 थी। व्हाट डज दिस वैल्यू मीन? कैन एनीबॉडी गेस? नाउ आई एम giving it as an assignment or next question to you. You will try to analyze and you will answer through comment. Is my question clear to you? मैंने कोवेरियंस का डेफिनेशन बता दिया, क्यों कैलकुलेट करते हैं ये बता दिया। आप एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन को आप आंसर करने की कोशिश करोगे। डजंट मैटर इट इज रॉन्ग एंड राइट, बट प्लीज ट्राई। Then we have positive covariance, we have negative covariances. Let's see what are they.
What is the meaning of positive and negative? See, exact value is not as important as its sign. ये जो sign है, that is very important. Why we'll see. A positive value of covariance indicates both dimensions increase or decrease together. The ones written in blue bold are very important. हम पॉजिटिव वैल्यू कोवेरिएंस से क्या रिप्रेजेंट करते हैं जब दोनों डायमेंशन आपको ये चीज तो समझ में आ गया कि ये कोवेरिएंस है हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं ये जो दोनों डायमेंशन मीन से कैसे डेविएट हो रहा है कैसे डेविएट को हम बोलेंगे तो सिंपल वर्ड में क्या होगा कि एक से उधर मतलब कितना सेपरेट हो रहा है या कितना पास आ रहा है कैसे हो रहा है ये चीज कितना डेविएट हो रहा है राइट तो ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस तभी होगा जब दोनों डायमेंशन या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है बट टुगेदर साथ में right if both the dimension increase or decrease together then this implies a positive value of covariances okay let's take this example suppose number of studies if you increase then suppose it results increasing the marks obtained marks तो जब आपने नंबर ऑफ आवर स्टडी ये बढ़ा दिया था आपको मिल गया क्या ज्यादा मार्क तो दोनों डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है यस और नो तो ये आपका क्या होगा एक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस और पॉजिटिव कोवेरिएंस होगा राइट सपोज नेगेटिव वैल्यू इसका अपोजिट हो जाएगा मींस ए नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स if one increases then other decreases or if one decreases other increases ठीक है यहाँ पे और एक एग्जांपल देके रखा हूँ एक्टिव सोशल लाइफ एट पीएसयू वर्सेस परफॉर्मेंस इन सीएस डिपार्टमेंट ये थोड़ा ऑब्जर्व करो आप पीएसयू में एक्टिव सोशल लाइफ वर्सेस सीएस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है आप ज्यादा सोशल होगे तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा कम होगा आप ये एक साइड से सोशल लाइफ को कीप कर रहे हो ज्यादा बढ़ा रहे हो और अकॉर्डिंगली आपका सीएस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस घट रहा है या बढ़ रहा है अगर घट रहा है ये बढ़ाने से तो ये होगा निगेटिव मतलब एक बढ़ाने से एक कम हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका निगेटिव वैल्यू ऑफ कोवेरियंस अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोवेरियंस इज जीरो तो कोवेरियंस ऑफ जीरो मतलब क्या है वो दोनों डायमेंशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं राइट यहाँ जब आपने सपोज आप ज्यादा सोशल हो रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस उस डिपार्टमेंट का कम हो रहा है या सपोज पहला वाला एग्जांपल में क्या हो रहा है ज्यादा पढ़ रहे हो आप तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहा है राइट बट ऐसा हो गया कि इन दोनों जो डायमेंशन हमने कंसीडर किया इनके बीच में कोई भी रिलेशन है ही नहीं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो सिंपल सेंस में तब कोवेरियंस क्या होगा आपका zero, right? If the covariance is zero, the two dimensions are independent of each other. As for example, height of students versus marks obtained in a subject. Of course, suppose एक इंसान का एक स्टूडेंट का हाइट बढ़ रहा है बट उसका मार्क्स उससे कोई रिलेटेड नहीं है कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है तो क्या होगा is there any relation between this height and marks obtained yes or no are you all present there or not I have not checked सब लोग हो ना क्लास में let me check am I audible or not I'm not getting any response. Yes, sir. Yes, sir. Okay, cool. You are there, but why you are not responding? Anyway, so what my question was that if the height is increasing or decreasing, but can we relate this to the marks obtained? No, sir. Simply no. So that means what covariance is zero. So this means what that two dimensions are independent from each other, right? So we have seen covariance as positive covariance, negative covariance, and sometimes covariance zero means there is no relation between them. I hope this portion is clear to you. So why bother with calculating covariance when we could just plot the two values to see their relationship? Why we bother with calculating their covariance when we could just plot the two values to see their relation? हम क्यों ये calculate करेंगे जब हम इसको plot करके ही मिल जाएगा
रिलेशनशिप क्या है। क्योंकि जो हम ये बात कर रहे हैं, व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर, वी आर नॉट डिस्कसिंग on a smaller dimensional way. We are actually talking about very large dimensional data set, right? Actually, this calculation that we are doing here, this is on a high dimensional data set, right? And वहां पे आप विजुअलाइजेशन करके रिलेशनशिप डिटरमाइन करना मतलब क्या है, एक साल लगा लेना एक छोटा सा काम के लिए, it's not possible, right? So that's why we calculate covariance. Covariance calculations are used to find relationship between dimension in high dimensional datasets, usually greater than 3, where visualization is difficult. I hope this is clear to you. Yes, Yes. sir. Okay. Thank you for the response. Then, if these variance, covariance are different with different types of covariance, all everything is clear. Then we come to our part of discussion, that is PCA, principal component analysis. Okay. So first of all, to mind that we will use in this technique in a high dimensional dataset, for a high dimensional dataset, so that we can simplify this dataset. Okay, if it is a linear transformation, we can define this is a linear transformation that chooses a new coordinate system for the dataset that greatest variance by any projection of the dataset comes to lie on the first axis, then that called the first principal component, then the second greatest variance on the second axis, like that. So this PCA is actually used for reducing dimensionality by eliminating the later principal components. ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, मैं इसको सिंपल सेंटेंस में बता देता हूँ क्या कर रहे हैं हम। आपको यहाँ तक पता चल गया कि कोवेरिएंस कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हायर डायमेंशन क्या है। अब ये पीसीए के जरिए हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा डायमेंशन है, उस डायमेंशन को हम कम करके एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। ताकि कैसे बनाएंगे, सपोज एक हर एक स्टेज में हम एक प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालेंगे, ताकि वो प्रिंसिपल कंपोनेंट ही उसके अकॉर्डिंग जितने भी वैल्यूज है उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। सिमिलरली सेकेंड, थर्ड, लाइक दैट। अब जो जिसका वैल्यू बहुत ये रहेगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। मतलब क्या है, सपोज 10 डायमेंशन से आप प्रोजेक्ट करोगे, प्रोजेक्ट यू नो द टर्म बाय projection. Projection means we are just mapping these values to into a different dimension. Okay, so ये higher dimension से हम उससे प्रिंसिपल कंपोनेंट लेके उस डायमेंशन को कम करके इस चीज को एक्चुअली प्रोजेक्शन कर रहे हैं। और ये कहाँ से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ this PCA algorithm. That is the main concept behind PCA. So this is a linear transformation that chooses a new coordinate system for every dataset that has greatest variance by any projection of the dataset comes to line on the first axis, known as first principal component, then second variance, that is second greatest variance, second principal component, like that. So thereby we try to reduce the dimensions. Okay, I hope this definition is clear to you. Now we have an example on PCA that is purely mathematical that I think that it would be better to discuss in the next class, if you say so. एक एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये क्या, ये जो डायमेंशन रिडक्शन का मतलब क्या है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैथ। आई थिंक दिस विल बी बेटर टू डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन द नेक्स्ट क्लास। Say yes, it is okay. Right? Okay, sir. Yes, sir. So be present in the next lecture. I will discuss that one. And thank you. Thank you, Have sir. a Thank you, sir.